Yeah, hi everyone. So we are into the sixth class of indefinite integration standard forms and theorems with proof. We are doing all the proofs, uh, and as I always keep on saying that you will be getting at least one question from this a series of seven videos. These are all short videos that I'm creating. So today we are going to do the last two theorems of indefinite integration. This video is especially for Maharashtra board students. Okay, so now let's begin with the class. Okay, I'll share the screen. All right, so this is the last thing that we did in the last class. Let's begin with the theorem. Today's theorem. This is called as integration by parts. A theorem. Integration by parts. So if you uh, remember integration, if you look at integration, बहुत सारे types है. There are many types. So if today we are not discussing the problems numericals, but uh, just to be with this theorem, something with this theorem, uh, the most important thing as far as integration is concerned is to identify the type. Once you identify the type, अगर आपने practice किया तो आप खुद का वो सारा problem solve कर सकते हो. Now, if you are aware of, there are only four types of integration. Basically, चार types ही है. One is direct, with some adjustments we solve the problems. The second one is integration by substitution, method of substitution है दूसरे टाइप का. तीसरा है जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और हमारे सिलेबस में फोर्थ वन इज पार्शियल फ्रैक्शन. सो हियर वी आर इन द थर्ड पार्ट. फोर्थ पार्ट में कोई theorem या proof है नहीं. There is no standard form in the fourth part also. So coming back to this, to prove this, let me say that and why to do this, we just need to prove this. तो इसके लिए थोड़ा करना पड़ेगा ऐसे. Let integration of v dx is equal to w. इसको w कंसीडर करते हैं. दो बार इधर इंटीग्रेशन ऑफ v आया है, तो उसमें से इंटीग्रेशन ऑफ v को हमने w कंसीडर किया है. और अगर आप जानते हैं कि डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, अगर इंटीग्रेशन ऑफ v इज w, दैट मीन्स dw, that means derivative of w is equal to v. So let this be equation number 2. Okay, now let's consider derivative of u into w. Derivative of u into w. Now here we are discussing derivatives and not integration. Okay, so as per the theory of derivatives, it is u into derivative of w plus w into derivative of u. All right, now that means derivative of u into w. Now, as per equation number 2, equation number 2 पे आ जाओ. equation number 2, equation number 2 बोल रहा है कि dw by dx क्या है, uv है, plus w into du by dx. We can do this everything in the one step, but just to for you to understand in a better manner, one by one, step by step जा रहा हूं. Now, once we do this, according to the definition of integration, by definition of इंटीग्रेशन का डेफिनेशन क्या बता रहा है. अगर जैसे यहाँ पे हमने देखा था w का डेरिवेटिव अगर v है तो v का इंटीग्रेशन w हो जाएगा. इट्स अ रिवर्स प्रोसेस, इट इज एंटी डेरिवेटिव. ओके, तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव अगर ये है राइट हैंड साइड पे, तो इसका मतलब u इंटू डब्ल्यू विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v plus w into du by dx bracket close with respect to x. All right, once you are here, now step by step, u into w. So what is w? W is integration of v dx.
right? At the same time, right hand side pe, as per the definition or the rules of integration, if there is plus sign in between, you can see here plus sign is there, the integrations can be separated. So this is uv dx plus integration of w into du by dx, right? Now this is very important part. Look at this, very important. इसमें क्या किया है मैंने? I have done only one thing, that w इसके बदले मैंने क्या लिखा है? Integration of v dx. Can you see here? Okay. And right hand side पे हमने separation किया है. कहाँ से आया? From equation 1. Okay. Now let me shift this a little. Okay. Now u integration v dx is equal to integration of uv dx, okay, plus, okay, coming back to this, इसमें एक w दिख रहा है, फिर से यहाँ पे w दिख रहा है, but what is w? W is integration of v dx, integration of v dx into, यहाँ पे can you see dw by dx है, du by dx and dx, right? As per the theory, we are looking for iska integration uv dx. All right. So just simple mathematics, integration of uv dx. Okay, that means we are shifting this to the left hand side so that it becomes minus. On the left hand side already एक term है u इंटीग्रेशन v dx, ये पहले से है लेफ्ट हैंड साइड में, और इसको लेके आते हैं माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन v dx into du by dx into dx, that is with respect to x. So this is supposed to be the last proof of integration. Of course, there is one more result that I'll be taking in the next page, right? So this is also called as integration by parts, right? इसके बारे में और डिस्कशन जब हम टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे तभी ले लेंगे. All right. Now come to the next, that is the last result, last proof, absolutely last proof of integration that we are doing right now, right? Now here the proof says, now सपोज यहाँ पे अभी इसको दो तरीके से प्रॉब्लम को, ये थियरी को सॉल्व किया जाता है. देयर आर टू वेज. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी से दैट e raised to x f of x is equal to t. Now remember, मैं substitution नहीं कर रहा. When we use the word put, that means we take the derivative. Of course यहाँ पे भी derivative लेने वाले into dx लेते हैं. Now here if I differentiating with respect to x, if I differentiate this, once again if you observe derivatives चलो ये u into v है. So how does we use derivatives? u into v कैसे होता है? u into derivative of v, that means e raised to x into derivative of f of x plus f of x into derivative of e raised to x is equal to t का derivative with respect to x, right? And now derivative of f of x is nothing but f dash of x plus f of x into derivative of e raised to x is e raised to x. रिमेंबर हमने सब्स्टिट्यूशन नहीं किया है. अगर सब्स्टिट्यूशन करते तो यहीं पे हम लोग dx लिखते हैं, राइट हैंड साइड पे dt होता सिर्फ, right? Now if I take e raised to x common from the left hand side, I get f of x. सिर्फ सीक्वेंस चेंज कर रहा हूं, f of x plus f dash x is equal to derivative of t. Okay, now what we have is
Now what we have is derivative of t is this. Naturally इसका integration according to the definition of integration, because integration is anti derivative, अगर इसका derivative, किसका derivative, t का derivative जो है is e raised to x f of x plus f dash x, तो naturally by definition of integration, by definition of integration, which means integration of e raised to x f of x plus f dash of x with respect to x will be equal to t, right? So if I mark this as equation number 1, from equation 1 हमें क्या मिल रहा है? From equation 1 what we get is e raised to x f of x is equal to t. t क्या है? e raised to x into f of x. Since it is integration, I'll be writing plus c, right? So this is the last proof. But here थोड़ा सा twist है, because बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर दिस इज द रिजल्ट ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. या तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहीं दिख नहीं रहा है, ये तो वैसे भी आप पहले भी पढ़ा सकते थे, बिकॉज दिस इज whatever I have proved. I have used simple definition of integration. By definition of integration बार बार चल रहा है, यहाँ पे कुछ बाय पार्ट्स का कोई लेना देना है नहीं. Then why in by parts we are teaching this? Let me explain you, let me try to explain you the same theorem, same result with the help of integration by parts. Try करते, कोशिश करते. Again same proof, सेम कर रहे हैं बट मेथड अलग यूज कर रहे हैं. सो दिस इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट. सो मैं दो मेथड आपको इसके प्रूफ के दिखा रहा हूं. तो द सेकेंड मेथड इज सिंपली आई विल स्टार्ट विथ लेट I equal to, just like a normal problem that I take, okay, e raised to x into f of x plus f dash x, राइट. सो हियर आपको समझ में आ रहा है डेरिवेटिव ऑफ, इसका मतलब है डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स है. नेचुरली बाय डेफिनेशन इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स होगा एफ ऑफ एक्स प्लस सी, राइट? बिकॉज इंटीग्रेशन इज नथिंग बट द एंटी डेरिवेटिव. ऑलराइट, नाउ इफ आई सेपरेट दिस, मल्टीप्लाई करके सेपरेट कर रहे हैं, ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा. ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स. नाउ द सेकेंड पार्ट इज ई रेस टू एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स. ऑलराइट, नाउ let me take you through this e raised to x into f of x dx. This I'm keeping it as it is now. Okay, now you want this to be proved with the help of by parts. चलो by parts यूज करते हैं. ये u into v है, ये हमने by parts अभी अभी प्रूव किया है. by parts क्या बोलता है? u into v dx is u integration v dx minus integration of integration v dx into du by dx. Okay, let me again write the by parts वाला formula for u v dx is u integration v dx minus integration of v dx derivative of u dx, right? So let me take this as, यहाँ पे आएगा e raised to x integration of f dash of x dx minus integration of f dash x dx derivative of u dx हो जाएगा, राइट?
यहाँ पे आगे हमने अप्लाई किया फॉर्मूला. नाउ इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x f of x dx plus, coming back to this is e raised to x. f dash x का इंटीग्रेशन क्या है? लुक एट दिस. f dash x का इंटीग्रेशन f of x माइनस वंस अगेन f dash x का इंटीग्रेशन क्या है? f of x du by dx, du by dx. ओके मतलब यहाँ पे बाय मिस्टेक आई रोट du by dx, अर्थात इधर क्या है? इधर लेट मी अगेन रीराइट दिस. What is u? E raised to x into dx. So e raised to x का इंटीग्रेशन कितना हो गया? E raised to x हो गया dx. Okay. Now if you look at this, e raised to x f of x, e raised to x f of x, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे. एंड आई गॉट माई आंसर एज e raised to x into f of x plus c. This is the answer for e raised to x into f of x plus f dash x. Hence, we have e raised to x f of x plus f dash x dx is equal to e raised to x into f of x plus c. Now, as usual, natural question by your side. Say exam में कौन सा proof use करना है? You can use any of the proof. राइट दोनों सही है. ओके नाउ यहाँ पे हम लोग सारे थियरम्स एंड प्रूफ्स हो गए हैं. नाउ देयर विल बी वन मोर वीडियो, लास्ट 3, एक सेट बाकी है लास्ट 3 स्टैंडर्ड फॉर्म्स का, वो एक और वीडियो होगा एंड दैट विल बी द लास्ट वीडियो. सो दिस 7 वीडियोस, remember that is going to help you. This videos are going to help you to score minimum 4 marks. So you might score 4 to 7 marks out of this. Right now, remember, as usual, wait a minute. As usual, I keep on saying, just do not attend the video, watch the video. This is not a movie. You just take a pen and notebook and sit with me. Just some point of time, you may pause the video, try on your own, and then आपके लिए वीडियो पे सारा कुछ सॉल्व करके दिया तो है. So please see to it कि इसका इस्तेमाल अच्छे से करो आप. Okay, I'll see you in the next video, in video number 7. That will be the last video integration. Thank you so much.